consolidation phase between the range of 15,000 on the top and 14,200-ish at the bottom. But the good thing is that the consolidation has become narrower. It's gone into the upper band of the consolidation zone. As I said last week, there could be quite a strong breakout only if it closes above 15,000. तो 15,000 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज देना था तो ही मोमेंटम देगा बोल के मैंने आपको बताया था ऑल आई थिंक लास्ट वीक आल्सो व्हेन आई डिड द एनालिसिस फॉर दिस वीक. तो वही हो रहा है कि 15,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा मार्केट एंड इट्स जस्ट बीन कंसोलिडेटिंग विद इन द चैनल. तो साइडवेज कंसोलिडेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बोले तो द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन. तो जैसे कि आई थिंक लास्ट वीक कपल ऑफ वीक्स बैक व्हेन आई हैड मेंशन कि फार्मा जाने वाला है तो फार्मा चल गया एक हफ्ता पूरा. आई थिंक दिस वाज लास्ट टू लास्ट वीक. I have posted a video on that as well. You can check it out. I'll post the link of that. तो एक हफ्ता पूरा मेटल गया फिर एक हफ्ता फार्मा गया. तो दैट इज व्हाट हैपेंस. साइडवेज कंसोलिडेशन होते रहता है. सो वन सेक्टर और द अदर कीप्स द इंडेक्स फ्लैट एंड डजंट अलाउ इट टू फॉल. I think that trend is set to continue going forward as well. तो चलो देखते हैं अभी कि इसका डेली पे क्या चल रहा है. So this is, see यहाँ पे support बन रहा था 14,600 वाला. The multiple touch points on this 14,600. If you have seen the chart I posted on Twitter, then you would have noticed that 600 से उसको पलटना ही था. तो 600 से 900 के बीच में अब रेंज बना चुका है. तो as soon as it breaks out, it needs a very strong closing above this. Only then we could see a strong momentum. ये वाला level is the best level to go long on the Nifty at least. Until then there is no point trading Nifty as such. कोई momentum वाला move तो मिलने वाला है नहीं. तो फालतू का दिमाग खराब मत करो. Better thing to do is to stick to stock specific trades. ठीक है. So now let us think. मैंने फार्मा का तो analysis last week दो तीन बार किया था. So whoever is interested can just go towards the pharma stocks for the pharma video and check it out. तो फिर अभी देखते हैं अपन stocks. चलो बैंक निफ्टी के बारे देख लेते हैं. ये रहा बैंक निफ्टी. So बैंक निफ्टी is still been underperforming the Nifty. तो ये अभी 33,000 round level has become your strong resistance. So this is not going to lend any kind of support to the index as such. Support in the sense ये लेकर नहीं जाएगा मार्केट को ऊपर. Either it will stay sideways या फिर अगर निफ्टी का बहुत अच्छा सा मूव आ गया ऊपर की तरफ then we could see a short covering rally यहाँ से. So this is the zone we should be looking out for. अगर यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे डबल बॉटम बना के W पैटर्न बना के ऊपर गया है but then again it's come back to the same level. So now let us see how it reacts over here. If it holds 32,000 round figure then maybe we could see a bounce. Otherwise we could see a gradual drop down till here 30,900 31,000 kind of levels. तो ये हुआ बैंक निफ्टी. Now let's discuss some stock specific ideas which I really like. The number one is Mota Bhai. I think I have told you about this before also दो तीन बार. अभी जाके ये थोड़ा अच्छा कैंडल बनाया है. काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया आफ्टर सो मच अडू. काफ़ी टाइम हो गया वैसे इसको कंसोलिडेट करते करते. सो लेट्स सी अगर ये निकलता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देन वी कुड सी सम शॉर्ट कवरिंग मूव. ये देखो यहाँ पे इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑल दिस वाइल. अगर ये क्रॉस कर देता है इसको देन वी कुड सी अ मूव टिल हियर 2000 तक जा सकता है रिलायंस एंड दिस विल प्रोपेल द निफ्टी हायर है ना. सो नाउ दिस इज योर वीकली कैंडल इन रिलायंस. तो ये अभी इनसाइड बार बनाया. ये देखो यहाँ पे ये इनसाइड बार बनाया देन इट हैज गॉन अप. दिस इज अ मॉर्निंग स्टार. यहाँ से वापस ऊपर गया देन अगेन इट वाज मेट विद सप्लाई अराउंड 2000 लेवल्स. 2000 से वापस 1900 पे आ गया. सो नाउ दिस विल बी द सेकेंड अटेम्प्ट इन दिस टाइम कि ये निकल
to for the buyers. This should be a good stock to go long on. If you have to go long, then you should stay long in Reliance and not on the Nifty. This is number one stock that I would like. Then the second stock which I'm really bullish on is this L&T. तो इसका अर्निंग्स आ गया, आई थिंक परसों को आया, फ्राइडे को आया था अर्निंग्स इसका. Quite a good stock, and it has been consolidating all this while. Up jaake it has given a weekly close which is higher than all the previous weeks, let us say previous 4 weeks. So now a break above this should take it towards 1500 and beyond. Earnings are pretty good. EBITDA margins have increased. Order book is good. So the margins outlook is quite nice. That is the main factor that I would, in spite of the labor shortage and all these kind of issues that the company has been facing, and in general the entire capital goods sector, in spite of that, this has been doing well. So this is one stock that I would like to look out for in the next weekly pay on the long side. Okay, this is one, and then the other one is ITC. I think I would have just discussed this in the previous video as well. इसका तो अभी 220 तो जाना ही है इसको. There is no stopping it till 220. So about 220, if we get a strong closing, then I will update it. उसके बाद तो सीधा 240. I think this could be the time when ITC could break out. Why? Because the entire sector is moving this time. Something like Britannia, something like Nestle. I think you would have seen all these stocks over here. uh, they were the top gainers on Monday. I mean, not Friday. तो ये देखो, this has been within the range all this while. It's been since November. ये अगर डब्बा बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो, this is the top of the box. Let us say this is the bottom. Fine, this is the bottom. तो ये अभी तक डब्बे के अंदर चल रहा था, and it's been quite some time since it's been consolidating. So if we see a close above this in the next week, then we could see a massive short covering rally in the FMCG sector. And इसके main components which I really like would be, first one is ITC, second would be Britannia. Britannia भी देखो, ये काफ़ी अच्छा बनाया है. So this is had been underperforming the entire FMCG pack. देखोगे तो ये FMCG index was at the top of the range, right? This is at the bottom of the range. तो अगर इसमें move आना है, then this could be a very good stock to go long on the in the FMCG sector, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है. यहाँ से अगर आपको मिल जाता है टिल 3800, दैट इज 300 रुपीज, ऑलमोस्ट 10-12% का मूव आपको मिल जाएगा ब्रिटानिया में. दिस इज अ गुड स्टॉक दैट यू शुड कीप ऑन वॉच, ब्रिटानिया. Then the next one would be Nestle. This also is quite a similar to Britannia, I would say, but this one being high value in terms of the share price. इसमें क्या होता है, usually there's low float, so the retailers generally do not uh, play in the stock much, but then the big guys, so that is why the low float is there. So the bigger guys are not interested in selling the stock. उनको पता है कि ये कुछ होने वाला है नहीं, in spite of whatever. They've got a very good market share in whatever the reason could be. But then I see that this stock could be headed for a nice breakout if the FMCG index does break out. Monthly पे देखोगे इसको, so even this also has made a quite a bullish candle. Monthly पे it is already closed above all the three previous candles, right? तो अभी ये निकलेगा तो ये सीधा 19,000 तक बन रहा है इसमें वैसे. This is a good stock you should keep a watch on, Nestle. Then we have Dabur is all right, I would say. तो अभी आपने देखा हाल ही में गोदरेज जी भी भाग गया था 20%. आई थिंक लास्ट वीक थर्सडे, और नॉट थर्सडे आई मीन. सो डाबर ऑल्सो इज क्वाइट नाइस बाय द वे. सो 520 से 535 का मूव दिया है इसने. दिस कैन स्टिल गो अप टिल 580 ish आराम से. दिस ऑल्सो वेरी बुलिश कैंडल. दिस काइंड ऑफ अ कैंडल एट सपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ पिन बार है. ये पिन बार है. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन.
यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा था, पलट गया यहाँ से. This is also a good stock you should keep on watch. Dabur, I'm just gonna add this. Yeah, so Dabur, and then what else do we have? Colgate Palmolive. This one is okay. I would rather pick up something like an ITC than this one क्योंकि ये weekly closing उतना strong नहीं है. So this is not the ideal candidate to go long on. Rest of them are quite nice. This one is not that good. तो ये हुआ. Then let us just look at the ratio chart of Nifty FMCG. ये लगाते हैं पहले. इसको लगाते हैं डिवाइड बाय निफ्टी. So we can look at this. So this is sharp outperformance in the last 1 week for the Nifty FMCG. So ये यहाँ पे outperformance इसका तभी आया था when the 2020 मार्च का जो लो आया था ना, that was when there was a massive outperformance क्योंकि तभी ये था कि defensive में लगाना है पैसा. तो I think pharma and FMCG were the ones which did really well at that point of time. Now also going forward, I think this guy has made a very good formation, and the outperformance by FMCG could reverse. I mean, the underperformance could reverse, and we could see some major outperformance in this. तो ये है आपका chart. So I think you could increase the weightage slightly in your portfolio into the Nifty FMCG going forward and for the next 1-2 months, I would say. तो जो भी डिस्ट्रप्शन, दिस इज अ वेरी गुड चार्ट, वेरी वेरी बुलिश चार्ट. और ये निकल सकता है अगर यहाँ के इसके ऊपर क्लोज दे दिया नेक्स्ट हफ्ते में, तो फिर ये जाएगा यहाँ तक आराम से. तो ये एक हुआ. एंड देन वी हैव, सो दिस कुड आउट परफॉर्म द इंडेक्स क्वाइट अ बिट going forward, Nifty FMCG. Then now coming to the weak sectors. The weak sectors for me would be, first one would obviously be this. मैंने this has to be the one of the weakest sectors, Nifty Metal. So अगर आपको लॉन्ग करना है तो FMCG में लॉन्ग करो और LNT में लॉन्ग करो, रिलायंस में लॉन्ग करो. और अगर शॉर्ट करना है then you should stick to, let's say, Nifty Metal. Nifty Metal में भी Tata Steel, ये रहा. So this is kind of a bearish candle, bearish hammer kind of thing. या फिर this can also be called a Marubozu. ये एक है which looks weakish. So this is something that you should be looking for on the short side. And then we have Bajaj Finserv. This also looks pretty weakish. तो अगर शॉर्ट करना है तो ये ऑल टाइम हाई पे, दिस काइंड ऑफ अ कैंडल इज नॉट गुड ऑन द वीकली फ्रेम. दिस ऑल टाइम हाई बाय द वे. तो ये डेली पे देखो. आई मीन इफ यू गेट अ क्लोजिंग बिलो दिस, बिलो 410872, then you could see some kind of shorts getting built up in this. अभी तो यहाँ पे आई थिंक over here only there was a signal to go short. I think I had updated it on a tweet also कि यहाँ पे जब इसने बनाया तो this was basically a range. तो ये है range अभी. So see if you can just notice this. तो ये अभी range बन चुका है. इसके नीचे क्लोज दिया तो ये सीधा यहाँ पे आएगा बजाज फिनसर्व. और इस यहाँ से अगर पलट के ऊपर जाएगा तो इट कैन गो अप टिल हियर अगेन. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग बोथ द ट्रेड्स ओपन. एक लॉन्ग साइड का भी ओपन होता है, शॉर्ट का भी ओपन होता है. तो लॉन्ग साइड ट्रेडर्स यू ट्राई टू बाय समवेयर हियर विद अ स्टॉप बिलो दिस. The short side traders, you try to go short once it closes below this, with keeping a stop loss over here, जो अब अभी अभी का closing है ये वाला. So I think both sides 100 rupees stop loss है and your target is close to 300 rupees. तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक stock है which you might be able to get some juice out of. So this is one. Then what else? by Nifty Pharma देख लेते हैं वो क्या कर रहा है.
I wouldn't recommend any going short in Nifty Pharma. Yeah, although it looks like quite a bearish candle on the daily chart, but I would still not recommend कि देखो weekly पे भी गंदा बना चुका है, so you could expect some sideways consolidation in this Nifty Pharma, in the Pharma index. क्योंकि ये क्या हुआ है, this has gone up too fast and there is all time high resistance that has acted now. तो इसके ऊपर जाने का कोशिश किया फर्स्ट टाइम में, कभी भी you should not expect any index to break out in the first time towards the high. तो अभी ये मोस्ट प्रोबेबली ये करेगा कि it can come back till 13,000, do some consolidation over here for the next 2-3 weeks or so, and then you could see a fresh up move again, Nifty Pharma. This is an index which is bullish for the next 2-3 years, so don't even think about booking profits. यहाँ पे you might see some sideways consolidation, so you can just bear it on. मतलब वो कोई झंझट नहीं है, especially when you have gotten this kind of a big move. तो यहाँ से तो थोड़ा बनता ही है consolidation, so nothing to worry about. One stock which is very strong in the pharma space is this is what I would like to go long on. क्योंकि बाकी सब are at all time highs and this is much lower than I think last time also I had last week also I think I had put this stock on the watch list and I had spoken about this stock. तो ये इधर से क्या है कि ये कैंडल जो है पूरा बंद हो गया होता तो अच्छा होता, बट देन मिनिमम यहाँ तक तो जाना चाहिए 400 तक. That is what I would say. Then there's that new news saying that there is some kind of a black fungus that is being seen in the people who have recovered from COVID after taking oxygen supply. तो ये म्यूकोमाइकोमायोफोसिस whatever that disease is called, इसका इलाज जो है this guy has, Biocon has. So this is one stock that could do well, underperformer of the pharma index. So this guy could do well. Then coming to the bank nifty in the end, बैंक निफ्टी भी ज़्यादा कुछ ट्रेड करने लायक है नहीं यहाँ पे. तो ये बनाया है वीकली एंड इट्स एट सपोर्ट नाउ whatever, but not the best kind of chart you would like to. Sideways रहेगा or it could come down. I mean, I think I have discussed it in the previous this one. ठीक है. Then comes to Bharti. तो इसका earnings है परसों on I think either Monday or Tuesday. I'm not sure which day it is, but then you should keep this stock on the watch list. मेरा इन्वेस्टमेंट आइटम है, जस्ट डिस्क्लोजिंग. बट देन हाँ, तो ये क्या है, इफ हैड इट क्लोज्ड समवेयर बिलो दिस देन इट वुड हैव बीन बैड. अभी के लिए ठीक है, बट आई वुड से कि अगर अर्निंग्स बहुत अच्छा आया देन डू नॉट बी सरप्राइज्ड, दिस गाय कुड गिव अ 5 to 10% मूव इजीली ऑन द अपसाइड. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को. वीकली पे ठीक किया, दिस जस्ट अ हॉल्ट कैंडल, यू कैन नॉट कॉल दिस अ बेरिश कैंडल. दिस वाज अ बुलिश वन. अभी ये हॉल्ट किया है क्योंकि इतना बड़ा 10% मूव दिया है, तो इसको थोड़ा हॉल्ट करना था, कर लिया. अभी नेक्स्ट हफ्ते को अगर ये दिस क्लोजेस अबव 572, देन यू कुड सी 600, 605, 620, नो मैटर वॉट एवर द नंबर यू कुड चूज, तो जा सकता है ये ऊपर. बुलिश चार्ट है. Just wait for some time, look for confirmation, then you can go long on this. Ideally, I would say a close above 563 on a daily basis should take it higher. Okay, then another stock which I was liking was this Zeal. ये डेली पे देखो, this was a long range candle बनाया, then it came down all the way and then gave a closing somewhere around the previous candle high. Not the high, I mean the closing. तो ये यहाँ से, ये तो रेंज में है अभी. दिस इज अ रेंज फॉर दिस. Oh, I think time's up, guys. Sorry, I cannot extend this. Thank you very much for listening. Bye.